Hello guys, good evening everyone. Welcome to our Clavimate classes. Clavimate, it is your true study mate. Okay guys, so our Clavimate classes application specially designed करा है CC पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ जोटी के एटी provide करा होची high definition animated classes, live classes, YouTube based doubt clearing, daily practice test and weekly test. तो ये सब सुविधा हमको कोठी मिलिबो on Clavimate classes application रे. सो एई एप्लिकेशन तमने गूगल प्ले स्टोर रु नहले ऐप स्टोर रु तमने डाउनलोड करिवो एंड एई क्लासेस रो लिंक सब निज फ्रेंड्स मन को भी शेयर करो से माने भी क्लासेस जॉइन करंतु एंड क्लासेस रो बेनिफिट्स नियंतु सो गाइस आमे कंटिन्यू करूथिले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ओके तो सेल रे आमे प्रीवियस से बहुत सारा चैप्टर पार्ट कंप्लीट हे गलानी जो माने प्रीवियस वीडियो देखिना से माने YouTube रे मते देखि परिबो यार प्रीवियस वीडियो सब आजिर क्लास रे आमे करिबा आ गोटे न्यू सेल ऑर्गेनेल जोटा कि होची माइटोकॉन्ड्रिया ओके प्रीवियस क्लास रे आमे कंप्लीट करिथिले न्यूक्लियस आज आमे करिबा माइटोकॉन्ड्रिया सो माइटोकॉन्ड्रिया आमे याको आ कोन कहि थाउ कॉन्ड्रियोजोम्स सार्कोजोम्स पावर हाउस एटीपी मिल्स एंडोसिम्बायोट इन द सेल तो ये सब होची कोन माइटोकॉन्ड्रिया रो सिनोनिम्स Mitochondria are the filaments self-duplicating double membranous cytoplasmic organelles of eukaryotic cell which are concerned with cellular respiration. Okay, the mitochondria होची filament shape रो self-duplicating means गोटे mitochondria duplicate है कि आ गोटे mitochondria से तैयारी करि परिबो डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट अछि mitochondria देखिबो तमर ए टाइप रो स्ट्रक्चर थाए ए टाइप रो स्ट्रक्चर होउछ तमर माइटोकॉन्ड्रिया रे डबल मेम्ब्रेन बाउंड के प्रेजेंट होउची साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थाए गोटे सेल रो साइटोप्लाज्म रे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थाए ऑफ यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोट्स मान के पाखरे एटा देखा जाय व्हिच आर कंसर्न्ड विथ सेलुलर रेस्पिरेशन तले माइटोकॉन्ड्रिया रो फंक्शन कोन से रेस्पिरेशन रे हेल्प करे सेल रो रेस्पिरेशन रे बुझियला occurrence found in all aerobic eukaryotic cells but in mature mammalian advesis mitochondria are lost secondarily ये माइटोकॉन्ड्रिया हमरो सबु यूकैरियोटिक सेल्स मानकरे प्रेजेंट अछि बट मामालियन आरबीसी रे हमर जो ब्लड रे आरबीसी अछि रेड ब्लड कॉर्पसल्स जोठी की नेक्स्ट स्टेज रे माइटोकॉन्ड्रिया गुडा को एब्सेंट थाए लॉस्ट हे जाय अर्ली स्टेज रे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहिबो बट मैच्योर स्टेज रे माइटोकॉन्ड्रिया लॉस्ट हे जाय दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स वेयर मेसोजोम्स एक्ट एज a substitute of mitochondria माइटोकॉन्ड्रिया रो सब्स्टिट्यूट होची कि मेसोजोम सेटा हमर प्रोकैरियोटिक सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल रेस्पिरेशन रे हेल्प करे किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया रो बदल रे मेसोजोम प्रेजेंट थाए जोटा कि तार फंक्शन करिवो नेक्स्ट साइंटिस्ट को नेम जने अछंती कोलिकर first discovered mitochondria as granular structure in insects striated flight muscles and are called sarcosomes फर्स्ट डिस्कवर करथिले कोलिकर माइटोकॉन्ड्रिया को कोठी as a granular structure in insect striated flight muscles insects मानकर जो flight muscles अछि सेठी से फर्स्ट डिस्कवर करथिले एंड तार से नेम देथिले sarcosomes next another scientist बेंडा first coined the term mitochondria से माइटोकॉन्ड्रिया बोली फर्स्ट तर नेम टा कॉइंड करथिले किए बेंडा सो आमे एठी कोन सब जानिया को पाइले कि माइटोकॉन्ड्रिया तार सिनोनिम होउची कॉन्ड्रियोसोम सार्कोसोम पावर हाउस को होउची बिकॉज़ सेठी हमर एनर्जी मिलुची एटीपी मिल्स को होउची बिकॉज़ एटीपी सेठी स्टोरेज थाई जे कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करे ओके एंडोसिम्बायोट इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया एमिति कैपेबिलिटी अछि कि से निजो को निजे डुप्लीकेट करि पारुची बुझियला एंड यार लोकेशन होची ये सब सेल रे प्रेजेंट है सेल रो साइटोप्लाज्म रे प्रेजेंट रहउची माइटोकॉन्ड्रिया मैच्योर आरबीसी गुडा करे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है आ प्रोकैरियोटिक सेल्स रे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है ओके नेक्स्ट देखिबा नंबर plant cell contain fewer in number than animal cell
Number of mitochondria is proportional to the energy requirement. प्लांट सेल बहुत कम नंबर रे प्रेजेंट रहउची एनिमल सेल अपेक्षा एंड यार नंबर इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट मींस जेतिके एनर्जी हमको दरकार पड़िबो सेही अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहउची ट्रिपानोसोमा chlorella and microstereus contain one mitochondria per cell ट्रिपानोसोमा ହେଇଗଲା chlorella ହେଇଗଲା the microstereus ହେଇଗଲା ଏ ସବୁ कोन गोटे इनवर्टिब्रेट्स त एमानकर सेल रे गोटे ही रहउची माइटोकॉन्ड्रिया ओके बिकॉज़ तांको सेतके एनर्जी दरकार पडुनी तो सेही अनुसार तांकर माइटोकॉन्ड्रिया नंबर भी कम अछि ह्यूमन रे स्पर्म सेल रे 25 टा माइटोकॉन्ड्रिया किडनी सेल रे 300 टू 400 माइटोकॉन्ड्रिया अछि गोटे सेल रे हेपाटिक सेल रे 500 टू 1000 जानि पडथुबो जेट एमीबा रे 50000 फ्लाइट मसल सेल रे 5 लाख बुझिला एई अनुसार तमरा कोन रहउची सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया रे नंबर तो सबुठु अधिक जोटा फ्लाइट मसल बिकॉज फ्लाइट बेले जेहेतु अधिक एनर्जी दरकार पड़िबो सेई अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया नंबर भी लार्ज नंबर प्रेजेंट थाए हमर फ्लाइट मसल सेल रे तो एटा हम देखिले माइटोकॉन्ड्रिया रो नंबर सबुठु कम तमर अछि जेमति कि ट्रिपानोसोमा हे जाओ क्लोरेला बा माइक्रोस्टेरियस मानक सेल रे स्पर्म सेल रे भी कम अछि 25 टा अछि तो एटा हेला माइटोकॉन्ड्रिया रो नंबर नेक्स्ट shape and size. Typically, mitochondria are generally rod-shaped. Length is 1 to 4 micrometer. Breadth is 0.2 to 1.5 micrometer. रॉड से तो देखा जाए ए टाइप रो टिके स्ट्रक्चर टा तार थाए देखिए डायग्राम in some cases may be spherical or oval or filamentous किछि रंग पाखे एते ओवल टाइप रो भी रहउची और filament type रो all mitochondria of a cell are collectively called chondriome सेल जो हमरो ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थाए ना ताको हमें कोन कहै थाउ बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया को chondriome constitute about 25% of cell volume रो 25% होची तमरो माइटोकॉन्ड्रिया रो volume mitochondria appear yellowish due to the riboflavin and is rich in Mn that is magnesium ओके माइटोकॉन्ड्रिया येलो एथि पय देखै सेठी राइबोफ्लाविन नाम रे गोटे पिगमेंट प्रेजेंट अछि एंड सेठी मैंगनीज कहि कि गोटे एटम प्रेजेंट थाए केमिकल लाइफ स्पैन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 5 टू 10 days 5 to 10 days पर माइटोकॉन्ड्रिया लॉस्ट हो जाए एंड सेठु पुनी आथले डिवीजन है कि सेल्फ डुप्लीकेटिंग है कि न्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस हुए they are continuously produced from the pre-existing mitochondria within the cell and destroyed within the cell ସେମାନେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହୁଅନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମାନେ ସେଲ୍ ଭିତରେ 5 to 10 days ପରେ ସେମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଯିବ ଏଇ ପାଖରେ ପ୍ରୋସେସ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ କି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କଲର ଦେଖିଲେ yellowish କଲର ରହୁଛି ବିକଜ ସେଠି ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ହଉଛି 5 to 10 days एंड माइटोकॉन्ड्रिया को ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल रहउची हमर ताको कहै होची कंड्रियोम बुझी पालो लेंथ और ब्रेथ होची 1.4 टू 0.2 1.4 1 to 4 माइक्रोमीटर ब्रेथ हो 0.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर नेक्स्ट एबे देखिबा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया Each mitochondrion is bounded by a mitochondrial envelope and encloses two chambers or compartments within it. Mitochondria तार outer जो covering रहुची ताको कोहा होची mitochondrial envelope. एटा कोही mitochondrial envelope हैला एंड ता भीतर दीटा chambers रहुची और compartments रहुची. फास्ट देखिबा mitochondrial envelope रो स्ट्रक्चर फास्ट हम जानिबा. It consists of two membranes called outer membrane and inner membrane गोटे outer membrane रहुची आ गोटे inner membrane रहुची both the membranes come in contact with each other at several places called adhesion sites or contact zones mitochondria जो envelope रहुची सेटा double envelope रहुची and से दुईटा जो envelope अछंती both the membranes come in contact with each other at several places तांकर contact केते गोटा जगह तांको जेमति कांटेक्ट हे कि से माने अछंती
तो ताको हमें कौन कहउछंती adhesion sites or contact zones कहा जाउची. The outer membrane is smooth but porous due to the presence of integral proteins called porins. It contains 40% lipid and 60% proteins. Okay. Outer membrane टा smooth अछि और सेठी pore formation हेकी अछि due to the presence of integral protein called porin. Outer membrane जो protein अच्छे से protein name होची porin. It contains 40% lipid and 60% protein. The mitochondria excluding the outer membrane is called mitoplast. Mitochondria हम यदि outer membrane को छाड़ी देबा तार जो inner part जतिकी भी रहिला ताको हम कहि परिबा कोन mitoplast. Mitoplast जेतेबेले outer membrane संगे ताको हम यदि include करिबा ताले ताको हम कहिबा mitochondria. तो एटा देखिलो structure. तो एटी important point कोन अछि गोटे outer और inner membrane रहउची. Adhesion site और contact zone रहउची दुटा membrane भितरे. Porin protein रहउची, lipid भी रहउची किछि percent and without outer membrane ताको कहे होची mitoplast. बुझियला. तो एटा हे गला तमरो ultra structure. तापर next point. The inner is semi-permeable. It is highly convoluted to form series of infoldings called cristae or mitochondrial crest. Each cristae encloses intracrystal spaces which is continuous with the outer chamber. The cristae greatly increase the surface areas of inner membrane. The inner membrane consists of 75% protein and 25% lipid. It is rich in enzymes. ओके इसमें क्या होता है एंजाइम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंड वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या है कि वो हाईली कन्वोल्यूटेड है जोटी कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट ताको हम कहउछनी माइटोकॉन्ड्रिया से फोल्डिंग को कुआ होची माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट. The cristae greatly increase the surface areas of inner membrane. The inner membrane consists of 75% protein and 25% lipid. तापर आसा माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स. माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर जो है it is two types. Outer chamber or inner membrane space. अगर होची inner membrane or mitochondrial matrix. Outer chamber kono a narrow space present in between the two membrane. The outer membrane is filled with a watery fluid and contain enzymes like adenylate kinase and a nucleoside diphosphokinase. Our inner chamber kono achi the matrix is filled with a homogeneous granular dense jelly-like material. It contains circular DNA 2 to 6 copies, mitoribosome, granules of inorganic salt, enzymes for citric acid cycle, and for the oxidation of pyruvate and fatty acid. Inner chamber रे different types of enzyme रहउची, salt रहउची, DNA रहउची. माइटोकॉन्ड्रिया तार निजर ओन DNA भी प्रेजेंट अछि. हैला आउ outer chamber रे कोन रहउची adenylate and adenylate kinase and nucleoside diphosphokinase. ए सब ए दुटा एंजाइम तार प्रेजेंट रहउची outer chamber रे. outer को कोआ होची intermembrane space. और इनर को कोआ होची mitochondrial matrix. Then next हम जाएंगे the matrix side of inner membrane and cristae bears numerous oxysomes. Other names elementary particles, Parsons particle, Fernandez-Moran particle, F0, F1 particle, H plus ATPH, ATP synthase. Mitochondria contain about 104 to 105 oxysomes regularly placed at intervals of 10 nanometer. Oxysome comprises about 15% of total inner membrane proteins. Oxysome consists of one headpiece or F1 particle or soluble ATPase, base or F0 subunit and a stock containing F1 subunit with F0. तो ये जो है ऑक्सीजोम का कंटेंट्स है पार्सन्स पार्टिकल, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल, F0 F1
H plus ATPase, ATP synthase. देखो ये है मिटोराइजम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर, मैट्रिक्स, डीएनए मॉलिक्यूल, F1 पार्टिकल, क्रिस्टी, ग्रैन्यूल। ये है ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर। ओके, इसका स्टॉक पार्ट है, ये हेड पार्ट है, ये बेस है। लेंथ है 11 नैनोमीटर। Function. They are the main seat of cellular respiration. Mitochondria are often described as powerhouse, storage batteries, ATP mills, or cellular furnace of the cell. Provide intermediate for the synthesis of important biochemicals such as chlorophyll, cytochrome, steroids, etc. Some amino acids are also formed in mitochondria. Mitochondria regulate the calcium ion concentration by storing and releasing calcium 2 plus as and when required. The calcium ion in turn regulate many biochemical activities in the cell. They help in beta oxidation of fatty acid. ओके, तो इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया से हमको हेल्प करुछि सेलुलर रेस्पिरेशन रे एंड ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पावर हाउस, स्टोरेज बैटरी एंड एटीपी मिल्स. ओके, देन it provide intermediate for synthesis of important biochemicals such as chlorophyll, cytochrome और steroid. And some amino acids भी किछिटा amino acid भी mitochondria रे तैयारी होची, calcium ion एटी formation होची. ओके, और fatty acid मानकर oxidation रे help करुची. तो एटा तमरा कंप्लीट होला माइटोकॉन्ड्रिया रा फंक्शन. तो तमे एटा बस से पढो, जाको किछि भी डाउट्स हो तमे हम कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि पारो. आज रे क्लास हम एतिकरे एंड करछंती. थैंक यू ऑल.